Hello बच्चों, let us read the question. A circuit containing a two-position switch S is shown in figure. A. The switch S is in position 1. Find the potential difference VA minus VB and the rate of production of joule heat in R1. B. If now the switch S is put in position 2 at t equal to 0, find 1. Steady current in R4 and 2. The time when current in R4 is half the steady value. Also, calculate the energy stored in the inductor L at that time. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है LCR सर्क्यूट. तो any electronic circuit which contains जिस पे there is any electronic circuit which has जिस पे एक resistors, capacitor और inductor connected हो either in series or in parallel. तो ऐसे एक सर्क्यूट को हम LCR सर्क्यूट कहते हैं. सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू अ LCR सर्क्यूट. सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन हम पहले ये जो सर्क्यूट डायग्राम है उसको हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. उसके बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी. तो अभी ये है द इक्विवेलेंट सर्क्यूट. तो हम नोट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिए हैं. गिवन रेजिस्टेंस R1 is equal to R2 is equal to R3 is given to be 2 ohms. फिर रेजिस्टेंस R4 का वैल्यू है 3 ohms. रेजिस्टेंस R5 का वैल्यू है 1 ohm. The capacitor has a capacitance that is 2 microfarad और इंडक्टर का इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी. अभी दो बैटरीज है. सो वोल्टेज फ्रॉम let us say A is 12 volts. वोल्टेज फ्रॉम B वो है 3 volts. सो इस क्वेश्चन सब पहले पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो इन स्टेडी स्टेट we do not have any current flow through the capacitor. So applying Kirchhoff's second law in loop 1. तो हम ये लिख सकते हैं कि -2 I2 plus 2 into I1 minus I2 plus 12 is equal to 0.
So simplifying this, हम ये लिख सकते हैं कि we have 2i2 minus i1 is equal to 6, क्योंकि ये होगा we will get minus 4i2 plus 2i1 is equal to minus 12. So simplifying this further, this is what we will get. तो अभी applying Kirchhoff's second law to the second loop. So applying Kirchhoff's second law to loop 2, तो हम लिख सकते हैं -12 -2 into I1 minus I2 plus 3 minus 2I1 is equal to 0. So इसको हम अभी further simplify करेंगे. So this will be -12 minus 2I1 plus 2I2 plus 3 minus 2I1 is equal to 0. तो ये आगे जाके हम लिख सकते हैं 2I2 minus 4I1 is equal to 9. तो अभी प्रीवियस जो इक्वेशन था इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 लिखेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हमें मिलेगा 3i1 is equal to -3. So I1 has a value of -1 amperes और I2 का वैल्यू आएगा. So from if you see equation 1, from that we can get I2 value to be equal to 3.5 amperes. Now we have VA plus 3 minus 2I1 is equal to VB. So VA minus VB is equal to 2I1 minus 3. So this will be 2 into minus 1 into 2 into minus 1 minus 3 is VA minus VB. Therefore VA minus VB का value होगा -5 volts. So this is the difference in the voltage. तो अभी power is given by so we know that power is I squared R. तो यहाँ पे P will be I1 minus I2 whole squared into R1, that is -1 minus 3.5 whole squared into 2 ohms. तो इसका वैल्यू आएगा. So the heat which is produced, the value will come out to be 40.5 watt. तो अभी क्वेश्चन बी का आंसर क्वेश्चन बी को आंसर करने के लिए we will take this circuit diagram here. तो ये है reduced circuit diagram. So we can say in position 2 steady current in R4. The steady current I naught is 3 divided by
3 + 2, इसका वैल्यू आएगा 3/5 which is 0.6 amperes. So अभी टाइम कैलकुलेट करना है when the current is half the steady value. Time at which current in R4 is half the steady value. मतलब अभी I होगा I0/2 which is 0.6 divided by 2 which is 0.3 amps. So we can say P half is equal to L by R1, no, so R4 ln 2. तो अभी L का वैल्यू दिए है 10 मिली हेनरी. So this is 10 into 10 power minus 3. This is R equivalent. So यहाँ पे these two resistances are in series, 3 + 2. So this will be divided by 5 ln 2. So this is 5 2s are. तो इसका वैल्यू हमें मिलता है 1.386 into 10 to the power of -4 seconds. तो अभी we calculate the energy stored in the inductor when T is T half. तो हम जानते हैं कि the energy stored in an inductor, U, उसको U से डिनोट करते हैं, it will be half L I squared. So this will be half into L का वैल्यू है 10 मिली हेनरी into अभी I becomes half of the steady current. तो ये है 0.3 squared. So this is 2, ये है 5. So we will get the answer to be, और ये होगा 0.09. So this value will come out to be 4.5 into 10 to the power of -4 joules. So this is the energy stored by the inductor when the current in R4 is half the steady value. At this time, तो इंडक्टर में 4.5 into 10 power -4 joules का energy store होगा. Hope you have understood it well. Best of luck.